Bismillahirrahmanirrahim. We have lecture number 14, three-phase induction motor, or this is our numerical number 2. A 460 volt, 85 horsepower, 4 pole, 50 hertz Y connected motor has the following parameters. ये वो सब parameters हैं जो आप लोगों को पता है. These are R1, R2, X1, X2 reactance or magnetizing reactance. The power frictional plus windage, जो loss है, these are 650 watts. Miscellaneous losses, sometimes also called as stray losses, these are 150 watts. We have core losses that are 600 watts, and slip is 2.5%. So what we have to calculate: line current, stator power factor, rotor power factor, rotor frequency, stator copper loss, power at air gap, converted power, output power, and efficiency. तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये इक्विवेलेंट डायग्राम जो है वेरी इंपॉर्टेंट. इसको फिल अप करना आप लोगों को आना चाहिए ताकि हम इसको सॉल्व करें. उससे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, नॉर्मली ऑल मोटर्स आर डेल्टा कनेक्टेड, लेकिन कुछ समटाइम्स मोटर आपकी वाई कनेक्टेड होती है. तो जब आपके पास मोटर वाई कनेक्टेड होगी तो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज जो आपको गिवन होते हैं, these are 460 वोल्ट, these are always line voltage, these are always line voltage. यहाँ से these are between two phases. तो कैलकुलेशन हमेशा आपने जो परफॉर्म करनी होती है, these are performed on a single phase. So we have 460 divided by under root 3. So this will be our phase voltage. तो जो आप यहाँ पे इनपुट पे वोल्टेज देंगे, this will be 460 divided by under root 3 voltage. तो अब हमने rest of our जो इक्विवेलेंट डायग्राम है इसको फिल अप करेंगे ताकि न्यूमेरिकल को फर्दर सॉल्व करें. सो वी हैव R1 दैट इज 0.058 ohms, GX1 आपके पास है 0.32 ohms. Similarly, R0 we can consider it as infinity. Rather this is not given, और ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम इसको infinity assume कर लेंगे. लेकिन ये बाय द वे इंफिनिटी है नहीं, क्योंकि द लॉसेस, कोर लॉसेस आर गिवन हियर. तो यहाँ पे जो लॉसेस हैं वो ये R0 रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमने इसको अज्यूम करना है कि दिस डजंट एग्जिस्ट हियर, so we can put infinity here. So Jx0 is given and this is a 9.24 ohms. Similarly, we have Jx2 and this is 0.386 ohms, and R2 by S, R2 is 0.037 ohms divided by the value of slip, and the value of slip is 0.025 because this one is in percentage. So first of all we want to calculate line current. तो लाइन करंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? लाइन करंट इज बेसिकली दिस करंट, as this is line current and this is our phase current. Motor is Y connected and this is the stator current. तो करंट आपका यहाँ से फ्लो करेगा, this one is a line current. So simply you have to calculate stator current. तो इसके लिए हमें टोटल इम्पीडेंस जो Z टोटल है ये इसका पता होना चाहिए. अगर ये Z टोटल हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हम ये लाइन करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. What will be the Z total? The sum of this GX2 and R2 by S, that is in parallel. Let me write that. So we have GX2 we have to यहाँ पे J साइन लगाना जरूरी है. J 0.386 plus 0.037 divided by 0.025, and this thing is parallel with J 9.24 ohms, and this whole thing इसमें हम क्या ऐड करेंगे? रेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, और वो है आपके पास 0.058 प्लस J 0.32 ohms. So यहाँ से after all these calculations we have the value 1.39
plus J 0.89 ohms. So this is the total impedance. Now we want to calculate current. Let's say this is IS. So this will be equals to the phase voltage. Phase voltage is 460 divided by under root 3 and divided by this Z2. So यहाँ से जो आपके पास वैल्यू रिक्वायर होगी that will be 160 angle minus 32.78 degrees. This minus sign is basically indicating that this is the lagging current. So next जो पूछा गया है that is stator power factor. तो stator जो आपके पास पावर फैक्टर है basically this is the sine function of this angle. So it is very simple to calculate. So we want cos of minus 32.78 degrees. So this will be 0.84 lagging. ये lagging हमने किस तरह लिखा कि angle, if the angle is in negative, we can put simply that this is the lagging power factor. Now third thing जो क्वेश्चन में पूछी गई है that is rotor power factor. Rotor power factor. तो rotor power factor कैलकुलेट करने के लिए आपको रोटर करंट का पता होना चाहिए. तो रोटर करंट simple, very simple to calculate. Now you know the value of your stator current. और ये आपके पास stator current है. Now this current is basically divided into two parts. One in the magnetizing branch and one is in the rotor current. You want this current. This is your IR, or you can write it as I2. आपने I2 calculate करना है तो ये impedance Jx0 divided by sum of all the impedance Jx0 plus J 0.386 plus R2 by X और मल्टीप्लाई कर देंगे इस करंट से जो मेन स्टेटर करंट है. तो यू कैन हैव, ये करंट डिवीजन रूल है, सिंपल, दिस इज द करंट डिवीजन रूल. तो हम इस पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द रोटर करंट एज वेल एज उसके साथ एंगल भी आ जाएगा. सो इफ वी हैव द एंगल वी कैन फाइंड आउट द रोटर पावर फैक्टर. सो IR is equals to J 9.24 divided by J 9.24 plus J 0.386 plus 1.48. This 1.48 is basically 0.037 divided by the slip value multiplied by 160 angle minus 32.78 degrees. So after calculation we have 151.8 and the angle is minus 24.03 degrees. एक चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, टू परफॉर्म ऑल द कैलकुलेशंस आप अपने जो कैलकुलेटर है उसको रेडियन से डिग्री पे कर दें. तो जब डिग्री पे करेंगे तो ये आपके गलती के चांसेस, गलती नहीं होगी, अदरवाइज ऑल द वैल्यूज विल कम आउट, आपके पास जो आएंगी वो गलत ही आएंगी. ओके, नाउ द स्टेटमेंट में आपने पावर फैक्टर फाइंड आउट करना था. तो पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी कॉस ऑफ minus 24.03 degrees and this will be 0.913 lagging as the angle was negative, so this will be lagging. Now the fourth part, how to find out the value आपके पास जो अब आपने फाइंड आउट करनी है वो है रोटर फ्रीक्वेंसी. आप लोगों को इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पढ़ते हुए एक बात बताई गई थी कि द स्टेटर एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. तो वो डिफरेंट कैसे होती है, you have stator frequency that is presented by F1 and you have the rotor frequency that is presented by F2. So F2 was equals to slip times
F1. So what is the value of frequency of the stator? That is equal to the supply frequency, and this is 50 hertz. So F2 is basically 0.025 multiplied by 50, and this will be 1.25 hertz. Now, what next? Stator copper loss. अभी जो हमने स्टेटर के कॉपर लॉस फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए हमारे पास स्टेटर करंट रिक्वायर्ड है और हमारे पास स्टेटर की रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है. स्टेटर की रेजिस्टेंस आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू R1, और स्टेटर करंट आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, एंड दैट इज इक्वल टू I1. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय I1 स्क्वायर टाइम्स R1. 3 मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया टू गेट 3 फेज टोटल स्टेटर कॉपर लॉस, क्योंकि 3 वाइंडिंग्स हैं. I1 is the current through one phase, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे to get the total copper loss. So 3 multiplied by 160, that is our stator current, multiplied by 160 square multiplied by 0.058. So यहाँ से जो आपके पास स्टेटर के कॉपर लॉस आएंगे, that will be 4.454 किलोवाट. So, ये आपके पास किलोवाट में है. एक चीज का ध्यान रखेंगे कि once you are calculating values in kilowatt, so all values must be in kilowatts. अगर आप watts में कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यूज फिर watts में होंगी. Now, the statement is, अगला सवाल उसने पूछा कि what is the power at air gap? Power at air gap. So this is equals to input power minus power at stator copper loss minus जो आपके पास होते हैं कोर लॉस. यू गेट द पावर एट एयर गैप. लेकिन अभी हमें इनपुट पावर का नहीं पता, तो लेट अस कैलकुलेट द इनपुट पावर. सो पी इन दैट विल बी इक्वल्स टू द फेज वोल्टेज और द स्टेटर वोल्टेज जो आप एक फेज को देंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर आपने लाइन वोल्टेज लेने हैं तो फिर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप फेज वोल्टेज लेंगे तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3. तो लाइन वोल्टेज इनटू स्टेटर करंट इनटू कॉस ऑफ 5, द पावर फैक्टर. और दूसरी जो मैंने अभी बोली रिलेशन, वो क्या है कि आपने जो स्टेटर को करंट वोल्टेज प्रोवाइड किए वो इनटू स्टेटर करंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस 5, और फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से टू गेट द सेम पावर. सो √3 multiplied by 460 volt multiplied by I स्टेटर करंट आपके पास है 160 और साथ में cos ऑफ स्टेटर, स्टेटर आपके पास जो इसका पावर फैक्टर था, and that will be minus 32.78 degrees. So after all the calculations आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, that will be 107.178 kilowatt. Now you can put this input power value in this relation to get power in air gap. So 107.178 minus 4.454 minus 0.6, ये आपके पास गिवन है, जिसे आप लोगों ने 600 watts, it was core loss given in the statement. So this will be 102.124 kilowatt. Now in the next part the statement is कि वो आपसे पूछ रहा है कि what is the value of power converted. तो पावर कन्वर्टेड आपके पास क्या होती है? दिस इज द पावर एट एयर गैप माइनस पावर एट रोटर कॉपर लॉस. अगर आप एयर गैप जो पावर है उसमें से रोटर के कॉपर लॉस को सबट्रैक्ट कर दें तो जो आपके पास पावर बचती है दैट इज कन्वर्टेड पावर. सो रोटर के कॉपर लॉस कैलकुलेट करने के लिए अभी तक कैलकुलेटेड नहीं है, तो रोटर के
कॉपर लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यू नो द वैल्यू ऑफ रोटर करंट I2 into R2 into 3 to get the total losses. So 3 multiplied by रोटर करंट आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट वीएन रूल 151.8 whole square multiplied by 0.037. So this will be 2557.79 watts, जिसको हम 2.55 किलोवाट से प्रेजेंट करेंगे. नाउ अगेन ये वैल्यू हमने रोटर कॉपर लॉस में पुट करनी है व्हेन वी हैव द पावर एट एयर गैप. सो 102.124 minus 2.55. So we have the converted power that will be equals to 99.566 kilowatt. Now इसके बाद इन स्टेटमेंट एग्जामिनर या इस न्यूमेरिकल में जो पूछा गया है दैट इज आउटपुट पावर. सो आउटपुट पावर आपके पास क्या होती है? जो कन्वर्टेड पावर है उसमें से आप लोग फ्रिक्शनल लॉसेस को, फ्रिक्शनल प्लस विंडोज लॉसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें, और अगर आपको कोई स्ट्रे लॉसेस गिवन है या मिसलिनियस लॉसेस जो गिवन है वो भी अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास जो पावर आती है दैट इज आउटपुट पावर. इस प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को पावर फ्लो की डायग्राम एक्सप्लेन की गई है. अगर आपके पावर में थोड़ी कंफ्यूजन हो तो गो बैक टू प्रीवियस लेक्चर, तो उसमें आप लोगों को यू विल बी क्लियर एवरीथिंग. सो व्हाट इज द कन्वर्टेड पावर? वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 99.566 minus what is the ये आपके पास जो भी पावर फ्रिक्शनल प्लस विंडेज पावर है, दिस इज गिवन एंड दिस इज 0.65 किलोवाट माइनस मिसलिनियस पावर आपको जो गिवन है दैट इज 150 वाट, so 0.155. so you will get the output power that will be 98.766 किलोवाट. लास्ट स्टेप में आप लोगों को जो पूछा गया है एंड दैट इज एफिशिएंसी. लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी. देयर आर 9 पार्ट्स of this question. Efficiency is P out divided by P. Now you have calculated everything. You have the value of P out, that is 98.766 divided by 107.178 into 100. You have the value that will be 92.15%. So this was a whole numerical. I hope you understand. I'll see you next time. आप इसको प्रैक्टिस करें खुद पे, और इस तरह की कोई और एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक हैं उसमें से देखें ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू वेरी मच.